Hi, this is Kenisha Awasthi and you're watching me on Bollywood Strips. Just want to ask about the new signal and the kind of controversy being created. क्या controversy है और it's a mental harassment kind of thing. तो कितनी ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर परेशान कर सकते हैं? What is the step you are taking regarding it? So basically, the controversy is this that I had made a very general statement on an Instagram Q&A about a certain artist that I was asked if I want to collaborate with him or with another artist. And I chose the other artist Emiway because I had already worked with him and, he discovered me and gave me a great opportunity with Grind. So my loyalty is with him and it will be with him till the end of time. And it was just a very general statement that I made, but the next day when I woke up, I had all these filthy kind of, DMs about threats which were verging on, physical threats and rape threats, and not just extended to me, but also to my mother and things like that. And I found that really weird. मुझे बहुत ही अजीब लगा. And then I put up a post saying that I'm getting bullied by this person's fan base, and I tagged that person also, that artist. और उसके बाद तो मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई जंगली लोगों को आप छूट दे देते हैं ना, लाइक द व्हेन यू लेट द वाइल्ड लूज. क्योंकि उसके बाद तो मेरे ऊपर अश्लील मीम्स और फलाना ढिमकाना और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई. और मुझे तो कई मुद्दों के बारे में तब तक इनके इर्द गिर्द पता भी नहीं था, बट उस समय मुझे पता चला कि उसी दौरान उसके जस्ट 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने एक दूसरी मॉडल जो भी आ चुकी है एमीवे के वीडियोज़ में, उनको भी इसी किस्म के थ्रेट्स वगैरह दिए हैं. इसी पर्टिकुलर फ़ैन बेस ने जो इसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. एंड उनको भी अगेन साइबर पुलिस जाना पड़ा और कंप्लेन करनी पड़ी. सो माय पॉइंट इस की लाइफ में क्या यही रह गया हमारा टाइम प्रेशस कि हम यहाँ भागे फिर वहाँ से हम FIR भागे, मतलब बिकॉज ऑफ सम साइकोटिक फैंस जिनको ये जो आर्टिस्ट हैं आके ना तो एडमॉनिश कर रहे हैं ना तो I mean, अगर आप ऐसे किस्म के बिहेवियर को एडमॉनिश नहीं कर रहे हो तो व्हाट इज़ इट, यू कंडोन इट, डू यू एंडोर्स इट कि आपके फैंस जो कर रहे हैं इट्स परफेक्टली फाइन? और वेयर डू यू लिव अंडर अ रॉक दैट यू आर नॉट अवेयर दैट दे हैव डन इट टू अनदर गर्ल, देन दे डिड इट टू मी, एंड नाउ विद दैट अदर गर्ल अगेन ऑल दिस इज हैपनिंग. अभी हाल ही में एक बहुत ही ख़राब उनका मीम बना के इन लोगों ने फिर से उन्हें टारगेट किया है. सो व्हाट्स गोइंग ऑन? लाइक इट्स अ फ्री कंट्री. And how come these artists, are you all like sleeping? You all live under a rock? Like you all live, where do you all live? You all live in India only, and I'm sure you all are aware of this. So how much does it take to come out and make a statement? Don't take our names ना. एक तो इनका हुआ है कि hype दिवा दे. भाई खुद को hype लगा लो पहले. 2.5 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर इनके दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स उतनी हैं जितने मेरे आते हैं. तो आराम से बैठ जाओ आप और आपके फ़ैन फॉलोअर्स, पहले अपने को हाइप लगा लो ना ठीक से अच्छे से अभी. और दूसरी बात ये है कि मतलब आई ऑल स्लीपिंग क्या है, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट आके आपको देने में क्या तकलीफ है कि भाई हमें ऐसा ऐसा पता चल रहा है कि हमारे फैंस लगातार विमेन को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें हमारे नाम से बुली कर रहे हैं, हमारे म्यूज़िक को डिफेंड करते हुए. और ऐसे अगर आप शख्स हैं तो आप हमारे फ़ैन बिल्कुल कतई भी नहीं है. इतना बोलने में क्या लगता है? मत लगाओ भाई हमें हाइप, हमारी हाइप भगवान लगाएगा हमें, आप थोड़ी भगवान हो. MS धोनी क्या मेंटलिटी क्या है, ये सिक मेंटलिटी का कह सकते हैं परिचय है, या देयर आर पीपल इन्वॉल्वड बिसाइड्स दैट कि एक ही इंडिविजुअल का ये काम होता है, या देयर इज अ ग्रुप और देयर इज समवन हु रियली हेट्स द सेलिब्रिटी कम्युनिटी या उनका अचीवमेंट से इनको हेट्रेड है? व्हाट इज द थिंग बेसिकली? It's a mix of both, but I also think it's कुछ तो दाल में भी काला होता है. कुछ तो दाल में भी काला होता है. ऐसा नहीं है कि सारे जो ट्रोल्स हैं जेन्युइन ही हैं. कई आई थिंक बोल सकते हैं आप या तो दे आर पेड या तो दे आर व्हाटएवर, बिकॉज आप जाएं अगर इनके प्रोफाइल पे तो आप देखेंगे कि ना तो तस्वीर है और है भी तो कोई एनिमे वगैरह कुछ बना है, और ना ही नाम कोई रियल नेम है. कुछ अजीब सा नाम होगा, जैसे एक का था वेनम ट्रोल, अब ये किस किस्म का नाम है? उसने मेरी मॉम के लिए रेप का थ्रेट दिया और 2 बार. सो मतलब आई थिंक दैट इट्स वेरी शेडी. एंड हालांकि इस पर्टिकुलर मेरे साथ जो केस हुआ उसमें तो ये भी कई रियल भी हैं, तो उनको तो मैं ट्रैक डाउन करके बाकायदा उनको मैं एक केस एक व्हाट यू कॉल इट, एक नोटिस भेजने वाली हूँ, एंड आई विल पेनलाइज देम.
because they have cost me my mental peace for weeks. So I will penalize them because अगर आप सोच रहे हो सोशल मीडिया पे आके आप कुछ भी मतलब कर दोगे और कुछ भी कह के आप निकल जाओगे और उसका कोई नतीजा ही नहीं निकलने वाला है, तो ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. इट्स हाई टाइम यार, सेलिब्रिटीज हु आर बीइंग टारगेटेड दैट दे शुड रेज देयर वॉइस. हमने भी अपने मेहनत से अपना स्थान बनाया ना, हमें कोई थोड़ी ऊपर वाले ने आके ऐसे मतलब चैरिटी में दे दिया, हमारी भी मेहनत है. Whenever there is a bad experience or a good experience which makes you intelligent, मतलब कुछ भी होता है तो अभी ये जो हुआ है आपके साथ, आपको बहुत नॉलेज भी गेन हुआ होगा, मतलब लीगली या Yes. कम्युनिटी से क्या रिस्पांस आया है या फ्रॉम द मीडिया साइड किस तरह से आपको मतलब रिस्पांस क्या है बेसिकली, और लीगली क्या एक्शन लिया जाता है, क्या एक्शन हो सकता है, क्योंकि आर दे लीव और आर दे टेकन एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड फ्रॉम द लीगल टीम? आई एम आस्किंग. No, so I believe that cyber crimes are really stringent now. ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ में आता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये जो किस्म की चीज़ें करते हैं वो लोग हैकर्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें ट्रेस करना मुश्किल तो है डेफिनेटली. इट कांट happen overnight. It takes its time and it's a legal proceeding. So I'm also hoping that people are tracked down. Even if two people get tracked down, I will feel okay. You know, there's something positive that came out of all this nonsense. And एक बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल होगा जिससे कि लोगों को थोड़ा आप डरना चाहिए. यू नो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के आप कुछ भी बोलो, इसका ये मतलब नहीं है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को यू नो लाइक मर्डर थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स उसको उसकी फैमिली को दो. दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. वन मोर थिंग, सिंगल का ज़माना है, काफ़ी सारा क्वांटिटी काफ़ी सारा है. म्यूजिक की बात कर लें, बट डू यू थिंक द क्वालिटी इज लैकिंग एनीवेयर? आई मीन कि अगर क्वालिटी नहीं है, यू नो पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ वीडियो एज सच, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे. Quality, I don't know. We are a country that celebrates mediocrity. So quality तो obviously is not celebrated only, no here. We are a country that celebrates mediocrity. आप फिल्में उठा के देख लो, आप तो हर क्षेत्र में है that we celebrate mediocrity. और ये तो मैंने हमेशा से कहा है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट तो बहुत it's the lowest criterion, no. मोस्टली आप कितनी जी हुजूरी कर सकते हैं, कितनी चमचागिरी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एंड mediocrity we celebrate as Indians. So I'm no one to say. मतलब आप हमारा देख लो कैसा है मतलब कंटेंट वगैरह. नेटफ्लिक्स का हाल ही में आर्टिकल आया था that Netflix did not fail in India. India failed globally. India Netflix failed globally. So that says it all. Talking about OTT platform and the explore किया आपने, how was the experience when you associate with OTT platform, और लोग का व्यू आज के दौर में कितना बदला है, क्योंकि बेसिकली OTT के व्यूअर्स तो हर कोई है, इवन अनएजुकेटेड पर्सन वॉच यू नो वेब सीरीज ऐसा, लेकिन व्यूज रिलेटेड टू, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी यू नो डिफेम किया गया था OTT प्लेटफॉर्म, उसमें बताइए व्हाट यू से. OTT is a good vehicle, I feel, but again now जैसा हमारे कंट्री में दूसरा एक ट्रेंड है भेड़ चाल का, तो अब OTT में भी भेड़ चाल शुरू हो चुकी है. एंड आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी क्राउडेड स्पेस नाउ. मतलब आए दिन कोई नया या तो वेब शो या तो वेब फिल्म या तो फलाना समथिंग रिलेटेड टू वेब. अब मतलब हर कोई को अब वेब ही करना है. सो शुरुआत हुई थी एक ऐसे टैलेंट को डिस्कवर करने की जो फिल्मों में नहीं पा रहे थे और टीवी नहीं शायद करना चाहते थे या करने का उनके पास वक्त नहीं था. लेकिन अब वो टैलेंट भी आया है वेब का, लेकिन ऑल द टीवी एक्टर्स, ऑल द फिल्म एक्टर्स, सो नाउ एवरीबडी इज डूइंग वेब. सो दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? लाइक आउट हियर वी वर्क ऑन ट्रेंड्स in our country, right? Like so I don't know, it is a good place, I believe, because there's so much work happening, but then again it's very crowded. I feel like एक डेढ़ साल में तो it'll be too cluttered, you know. It is already, I feel, very cluttered. Like every day there's a new web platform. Every day there are at least 2 to 3 new web shows that are either being announced or releasing or something or the other. So it's over किसी भी चीज़ का ना होता है तो फिर वो उसका जो चार्म है ख़त्म हो जाता है. अभी इनिशियली जैसे 2 साल पहले तक यू नो वेब का कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता था तो वी यूज्ड टू बी एक्साइटेड, ओ सीजन 2 एंड ऑल. नाउ इट्स लाइक इतना bombardment हो गया है वेब दैट इट्स लाइक oh god, like it's too much, you know, बहुत ज़्यादा ही, like it's over, it's too much. And one more thing, I mean, you know, being part of a family which is associated with the film industry, how does it help out? I mean, not new to the industry as such. Sure, क्या कहना चाहिए? It helps out only with the fact that I have never had to worry about my accommodation, but everybody's hustle is the same, क्योंकि इस इंडस्ट्री में असलियत में स्ट्रगल जो होती है वो मेंटल एंड्योरेंस की होती है. इट्स अ टेस्ट ऑफ मेंटल एंड्योरेंस. इट्स नेवर अ टेस्ट ऑफ you know
कि ओ यू नो ये गाड़ी से आ रहे हैं कि ये रिक्शा से आ रहे हैं, सब लोग उसी ऑडिशन की लाइन पे खड़े होते हैं, चाहे फिर आप एलए से सीख के आ रहे हो या आप एलेंट्रा से आ रहे हो या फिर आप रिक्शा से आ रहे हो, तो स्ट्रगल मूल तौर पे सबकी सेम है। और वो स्ट्रगल ये है कि मेंटली हाउ कैन यू स्टे पॉजिटिव एंड मेंटल एंड्योरेंस कितना है आप में, यू नो, बिकॉज दिस इंडस्ट्री विल टेस्ट योर मेंटल एंड्योरेंस डेफिनेटली। No, more thing, I mean, as a lead artist, age is a factor. जब से OTT आया है, character artist का बहुत demand हुआ है, you know, Yes. and that age factor has Yeah. been demolished. तो वो कितनी अच्छी बात I है think कि that's the one thing which is very beautiful, you know, because I mean इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, you know, जो कि जिनको शायद, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना रिजिड, कि दोस्त का फ्रेंड है तो दोस्त का फ्रेंड ही रहेगा, मॉम है तो मॉम ही रहेगी, अब वो बहुत हद तक मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू नो सीजन्ड आर्टिस्ट जो कि मतलब सीनियर हैं और बहुत टाइम से जिनके पास इतना टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एप्ट यू नो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप देखो, आप कितनी भी बड़ी फिल्में हो, लेकिन आपका 5-10 मिनट का रोल है, तो आप कितनी भी अपनी कलाकारी दिखाएंगे, आप पूरी तरह से अपना टैलेंट डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट येस द ग्रेट आर्टिस्ट यू नो ऑफ theatre, thespians, seasoned thespians and seasoned artists, you know, are getting their due, and it's really time that they should get their due. सोशल मीडिया इज हेल्पिंग आउट इन एवरी वे, मैन हर बिजनेस हर Yes. इंडस्ट्री में हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन जहाँ तक आर्टिस्ट की बात करें, डू यू थिंक द काइंड ऑफ रिस्पांस दे आर गेटिंग थ्रू फॉलोअर्स इज लॉजिकल एज सच? आई मीन तो कास्टिंग आपकी फॉलोअर्स देख के हो रही है कि इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है तो चलो इसको कास्ट कर देते हैं, फेसबुक पे इतने फॉलोअर्स हैं, डज इट मेक सेंस एज सच? Look, I'm a very different kind of an artist. First of all, I've never depended on, you know, just a web or a film or whatever to push my content. The reason and the idea behind social media is that you push your content through your own independent handles. You know, instead of just looking at it कि ओ मेरे अब इतने followers हो, अब मैं यहाँ से discover हो जाऊँगी या वहाँ से, आप अपने content को curate करो ना। आपके पास अच्छे followers है, you curate your content. What are you waiting for? You don't have to wait now. You have it's like a B2C, you know. It's like business to consumer directly. So now when you're at a B2C level, for you to still be B2B and then C, that doesn't make sense to me. So it doesn't matter now whether आपके इतने followers हो के आपको कौन सा web में मिल गया या film में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है. It's good. It's a bonus. But what are you doing with your own following? You know, are you curating great content? Are you curating great pictures? Are you curating good causes? You know, are you curating your handles well, or are you just putting gym selfies? Nothing wrong with putting it, but your entire grid cannot be about that, because social media essentially is all about solutions that you have for people, how you can entertain them, how you can talk about causes, how you can basically provide for some kind of a solution. It's not about what watch are you wearing, which restaurant are you eating in, which gym do you go to. Nobody is interested in somebody who is quite that narcissistic, let me assure you of that. So अगर आप अपनी handle को, अगर आप अपनी following को you know किसी भी किस्म की value add नहीं दे रहे हैं, then I don't know, then all the best to you. And one more thing, I mean, female-oriented films are doing very well. I mean, recently, Yeah, by yeah. बहुत अच्छा business हुआ है. You know, Alia has been praised Superb. by individual. Superb. आपको क्या लगता है कि female-oriented, complete female-oriented, without Yes. the support of any male leading actors, can work out at box office? Definitely, with actors like Alia, she is such a, I mean, what can I say? Like, you know, I mean, I'm to getting goosebumps now even talking about her, because she's a new kind of artist, you know. She's just redefining everything. I don't know if we realize that she is the wave that we all have been waiting for, you know, the wave that brings about the change. And she is so nice and polite and so soft spoken, you know. I mean, इतना ज़्यादा hype होके कोई इतना लो प्रोफाइल हो सकता है, यू नो, मतलब कोई उनके तरफ से शोर शराबा नहीं आता कभी भी, मतलब कितनी ग्रेसफुल भी है ना वो. शी इज सो सेंसिबल एंड मैच्योर फॉर हर एज. सो आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर एंड आई थिंक Alia Bhatt is going to be one actor who is going to change the whole trajectory of Indian cinema, not just future wise but even historically. I think she is a trailblazer, and abhi to I think उनकी जर्नी जस्ट शुरू हुई है, यू नो. सो इन द नेक्स्ट 15 years and all, oh my god, I don't know, I think I see her going as big as Meryl Streep and all, you know, honestly, world stage pe, like globally, not just in India. Lastly, being an actress as well as a trained musician, so what is the project you are looking forward, or what kind of project basically you want to work in? I mean, किस तरह के project में आप basically काम करना चाहती हो? So
खुद के जो मेरी एक इन हाउस टीम है, खुद का हम जो भी ब्रांड हमें मिलता है हम उसका ब्रीफ लेके पूरा मेरे पास क्रिएटिव कंट्रोल्स होते हैं, तो मैं उस किस्म के करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरे पास फुल ऑटोनॉमी हो। मैं उस किस्म के अपने म्यूज़िक बनाने चाहती हूँ जो मेरे साउंड हो और मेरे पसंद के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जिनकी सेंसिबिलिटी मुझे भी समझ में आती है, उन्हें भी मेरी समझ में आती है, तो हम अपने किस्म का म्यूज़िक भी आगे पुश कर सकें। और जहाँ तक कमर्शियल मेन स्ट्रीम काम है, तो आई वॉन्ट टू नाउ स्टार्ट डूइंग वेरी कॉम्प्लेक्स सीरियस रोल्स। अभी तक मैंने बहुत ग्लैमर ड्रिवन रोल्स किए क्योंकि इनिशियली वही मिला, एंड कोई भी सेंसिबल इंसान ये जानता है दैट in the start you don't have a choice, but ab bhagwan ki kripa se I have a really good following, so I can afford to choose. Now I can afford to make choices, and I am. So I have said no to innumerable projects in the last 1 year, but I am working on some really good projects right now. So I'm doing a web show with Sony Live, I'm doing one with MX, and I'm doing one which is we are not decided on the OTT, but again it's with a good star cast. There's Sharib Hashmi, there's Freddie Daruwala, and Varina Hussain. So I'm going to be very selective going forward because I am always busy anyway. Na? Matlab, I kind of run so many verticals. I also have my own business lines and everything. I'm also starting my own. I have an apparel line which is basically fan merchandise. I have interior decor items, and now I'm going to launch some more product lines this year. So the point is you have to be a working artist or a working individual. Let me make it very generic, because I think a lot of people get hung up ki, oh, as an actor chance nahi mil raha hai, to life puri waste chali ja rahi hai. Aisa thodi hota hai. You have to work, na? Your goal in life is to be a fruitful human being, a tax-paying human being who is working every day. So just be a working individual. That's my goal. I want to be a good tax-paying working individual that has a lot of people that she can provide employment for, because I'm not just here for me. I need to make my presence on this planet justified at my level. Maybe at a superstar level they can provide for 500 employees, but at least if I can provide for 7, 8, 9, whatever, I should do it, And alongside that, I mean, then if you're good and if you're hardworking and sincere, if your referencing is solid, and if you again have an innate sense of creativity, which I don't think any school or any classes can teach you, that either you have it or you don't. Either you are an artistically inclined person or you're not. That's my solid belief. I mean, these kind of courses can definitely technically make you strong, but wo jo soul hai na, that has to be of an artist. So if you're open to learning from life, if you're open to learning about everything that's going on around in the world, I think you'll be a woke person. If you're a woke person, you'll always have opportunities. Thank you.